Hello students, we are going to discuss about the vertical motion, vertical circular motion, and in this motion we want to calculate the minimum speed required at the bottom point so that it completes a circle. So the minimum velocity given at the bottom point, suppose this point is B, so that it is going in a circle and completes a circle. And suppose this particle, if it is connected by a string, so at the topmost point there is a slack, just a slack at this point, and after it completes the circle. The velocity at the topmost point, it is not 0. At the topmost point the tension is 0. Basically the tension in the string is 0. So first of all we write the forces at the topmost point. Tension plus mg force, which is downward direction. So the tension is 0 because at this point there is a slack in the string, and this particular force is equal to the centripetal force. So the centripetal force, we know that it is given by mv square upon r. So mvt square upon, here r is the length of the string. The radius of this circular path is the length of the string. So mvt square upon L. So this m cancels with this m and we get vt square is equal to gl, or we can say that the velocity at the topmost point is square root of gl. So this is the value of the velocity at the topmost point. Now to calculate the minimum speed required at the bottommost point so that it just complete the circle, we have to use the principle of conservation of total mechanical energy. So we can say that the total mechanical energy is conserved. So the total mechanical energy at point B, that is point bottommost point, is equal to the total mechanical energy at the topmost point. Now taking this point, bottommost point, as a reference height 0, we can choose any point as a reference height is 0. So let us choose this point as reference height 0. So the total mechanical energy at point B, or the bottommost point, is equal to the kinetic energy at point B plus the potential energy at point B, and since the h is 0, the potential energy is 0, and the kinetic energy at point B is given by half mv square. So half mvb square. So this is the total mechanical energy at point B. Let us call it as equation 1. Similarly, the total mechanical energy at point T, which is the topmost point, is equal to the kinetic energy at point T. So the kinetic energy at point T is half m vt square plus the potential energy at point T. Potential energy is given by mg into the height. So the height of the topmost point with respect to point bottommost point is 2L. So it is mg into 2L. Now from equation 1, Vt is equal to square root GL. Putting this value here, so half into m into GL is plus mg into 2L. So in this way, this is the equation number 2. Now equating equation 1 and 2, that is equating total mechanical energy at point B to the total mechanical energy at point T, bottommost point and the topmost point, equating their energies. So half m Vb square is equal to half m GL plus mg into 2L. So this comes out to be 5 mgl by 2, and this is equal to half mvb square. This half cancels with this half, this m cancels with this m. So vb square comes out to be 5gl, or we can say that vb is equal to square root of 5gl. This is a very important result which is used to solve many problems in vertical circular motion. तो यहाँ पे हमने एक डेरिवेशन किया है, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश की है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में. हमने यहाँ पे रिलेट किया है या कैलकुलेट किया है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड
एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर सके, एक वर्टिकल सर्किट कंप्लीट कर सके। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट जाके स्ट्रिंग में स्लैक आ जाता है, लेकिन उसके बाद सर्कल फिर से कंप्लीट हो जाता है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके लिए सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है बॉटम पॉइंट को, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे हाइट को 0 इस पॉइंट की कहा है। फिर उसके बाद हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्सेस लिखे, एक टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे जाके जस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इस पॉइंट पे आके स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया। और इसको हमने बराबर रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे आर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल के बराबर। यहाँ से हमने कैलकुलेट की वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, जो निकल के आई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल। फिर उसके बाद हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाली, बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो कि केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है। हमने यहाँ पे एच को रेफरेंस 0 माना है। इसे हमने बराबर रख दिया हाफ एम वी बी स्क्वायर। हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड को वी बी कहा, इसे इक्वेशन 1 हमने लिखा। इसी तरह से हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली पॉइंट टी पे, जो कि बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के। सो हाफ एम वी टी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L। यहाँ पे जो हाइट है टॉप मोस्ट पॉइंट की बॉटम के रेस्पेक्ट में, वो है 2L। वी टी स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से वी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा GL, वो वैल्यू हमने पुट की। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 हमारी मिली। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बेसिकली। उसके बाद हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट टी, इनको बराबर रख दिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ से हमने वी बी की वैल्यू निकाली, जो निकल के आती है स्क्वायर रूट 5GL। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनमें ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।